Welcome to this workshop on writing samples and essays. As you know, this is part of the Pakistan Graduate Mentorship Program 2023-2024, and we've already organized 7 workshops on different aspects of the university and scholarship applications, and this is the 8th workshop in that series. But before we go ahead and before I sort of explain what the outline of today's session is going to look like, just a reminder that this session is being recorded on active speaker mode. So if you unmute yourself at any point of time during this session, you will appear in the recording. Therefore, when you have questions and do not wish to appear in the recording, just put them in chat and I will read them out for you. So this is the outline. I'll quickly, once again, briefly introduce the workshop and the panelists for today, and then I will hand over to Amna, who will take us through the substantive aspects of the session before she hands it over back to me for the last bits, and then we will do a question and answer session. Great. As I said, we put together a 10-part workshop series for mentees on the Pakistan Graduate Mentorship Program 2023-2024, covering a range of aspects of university and scholarship applications. And today's workshop, which is the 8th in this series, will discuss writing samples and essays that are generally required as a part of your applications to graduate programs. Different programs have different requirements, and we will try and cover as much as possible in today's session. I will speak a little bit towards the end after Amna has taken us through the substantive part. So Amna, some of you will have already met her, is doing an MPP, which is the Master of Public Policy at Oxford, and I believe you are in great hands as she takes you through the substantive parts of this session. Over to you, Amna. Thank you, Samir. Thank you so much. I hope everybody can hear me fine. Good to be back. And today I'll be focusing more. Last time we spoke about the essays, the personal statements, and today I will be talking about the writing piece that is required of you when you apply for a graduate program here at Oxford. And I will be giving you a detailed overview of what we think is right in terms of writing that piece, but also I will give you some sort of insight into what I wrote for my piece, which was required for the MPP application. So for the humanities and social sciences, generally there is a requirement for a written piece that you have either written before or you're supposed to write over there, depending on the course that you have picked, right? So one of the first and most important things that you need to do is that you need to go through the website in detail. The website in detail, of course, is the website of the course that you have applied to, because har social science ke course ki requirement alag hai, right? So you can't be, whatever has worked over here would not be working in another admissions essay that you're supposed, in admissions writing piece that you're supposed to write. So the reason that they ask for a writing piece is to see that, what are your strengths in terms of writing, in terms of research, in terms of critical analysis. And most of the times in the socials and humanities part of the application process for a graduate program, I think they're looking for people who can identify a problem and come up with a good solution for it, like a balanced solution for it, right? So it can be anything, right? So some of the people usually in Pakistan universities, ab to bahut sari universities mein agar aapne humanities mein bachelor's kiya ho, to you would already have written a lot of things in that regard. अगर आपकी इकोनॉमिक्स में डिग्री है, अगर आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है, so there might be something that you wrote as a term paper for your coursework, or it could be just once you finished your degree, your thesis, or again, like during the degree you wrote something academic which was published. So it could be anything. It could be something which is already written by you, or it could be something that you wrote as part of the application process. Completely depends on you. It is not necessary that it needs to be published in a paper. Like ये कोई requirement नहीं है कि ये जो written piece है आपका वो कहीं publish हुआ हो. मैंने for example अपनी MPP के application में मैंने when I wrote my personal statement, उसके साथ मैंने अपना जो writing piece था वो मैंने उसके साथ
ऐसे के साथ ही लिखा था, राइट? सो इट वाजंट समथिंग दैट आई ईदर डिड इन माय डिग्री और वाज पब्लिश्ड और पार्ट ऑफ माय वर्क, बट मैंने सेपरेटली व्हेन आई वाज राइटिंग माय एसे तो साथ ही मैंने वो अपनी एकेडमिक राइटिंग पीस भी लिख दिया था. सो दैट्स वेरी वेरी पॉसिबल. सो डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग रिटन. यस. ये भी हो सकता है एट टाइम्स कि आपने अपनी थीसिस की हो और आपकी थीसिस बहुत बड़ी हो, बिकॉज अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज स्कूल्स दीज दे गेट लाइक thousands and thousands of applications, right? So they have very specific requirements of how the written piece should be. So sometimes आप शायद सोच रहे हो कि मैंने अच्छा अपना थीसिस जो था वो मैंने एक ऐसे पब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम पे किया हुआ था, पब्लिक पॉलिसी के इशू पे किया हुआ था, विच आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन. तो क्या मैं वो अपनी थीसिस भेज सकता हूँ या भेज सकती हूँ? तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट the you have to summarize it and fit it in the criteria that they have given, right? So jo criteria, again I reiterate myself over here and say that please go through the website and see exactly what the requirements are, और उसके मुताबिक अगर आपका ऑलरेडी कोई रिटन पीस है आप उसको छोटा करके समराइज करके फिट करके उसकी रिक्वायरमेंट्स में लिख के भेज सकते हो. That's also very possible. But all the important information, again, there is no general rule. It is from course to course. So for example, if you're applying for international development, उनकी requirement for the written piece would be something else. अगर आप MPP के लिए कर रहे हो, उनकी होगी कुछ और. So you need to read it very carefully to see के क्या मांग रहे हैं वो आपसे in terms of your written requirement, right? Sorry, written piece. तो ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिएगा. लेकिन मतलब वो चाहते क्या हैं? ये तो बात हो गई ना कि उसमें लिखना मतलब होनी क्या चीज़ चाहिए, बट वो चाह क्या रहे हैं? आप ये याद रखिएगा जब आप सोशल साइंसेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज़ यूनिवर्सिटीज़ आर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइट? कि आपने अपने आस-पास, जैसे कि मैं आपको अपनी अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आपने एक प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफ़ाई करना है, राइट? सो you can't talk about, you can talk about for example education, but then you have to be very specific what part of education you're interested in, कि education में कहाँ मसला है. Somebody I know, they wrote a very good piece on the national curriculum, right? जो पाकिस्तान में अभी start हुआ है national curriculum, and she wrote about the national curriculum and what loopholes the national curriculum had. So what you need to understand is that you need to first have a thorough understanding of the subject that you're writing on. ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि हाँ पाकिस्तान में जो है वो क्लाइमेट का बहुत मसला है, बिकॉज क्लाइमेट के जो रिप्रिकॉशंस हैं वो पाकिस्तान फेस कर रहा है. यू नीड टू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एंड मेक श्योर दैट your assessment of the problem is very specific. It's not wide. आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जो है वो क्लाइमेट का मसला है. आपने ये कहना है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट की वजह से एजुकेशन के ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहा है और उसका ये सोल्यूशन होगा. ठीक है? So you have to, from the generic, you have to go to very very specific. और उस specific में भी आपने देखना है कि मसला क्या आ रहा है. एजुकेशन पे क्या मसला आ रहा है? एजुकेशन पे मसला ये आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है. एजुकेशन पे ये मसला आ रहा है कि टीचर्स की कमी हो गई है. एजुकेशन पे ये मसला आ रहा है कि जेंडर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि बच्चियां अब स्कूल नहीं जा पा रही, राइट? सो जस्ट स्पेसिफाई द प्रॉब्लम and then again come up with a very viable solution for it. ऐसा solution हो कि जो doable हो. ठीक हो क्या? बैलेंस्ड हो. ये ना हो कि हम कहे कि जी $2 बिलियन एजुकेशन सेक्टर में डाल दें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी. ऐसे नहीं है. बड़ी ही स्पेसिफिक सी प्रॉब्लम का आपने उसी कंट्री का सोल्यूशन देना है जिधर वो प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री. तो उन्हीं के होते हुए उसी रिसोर्सेज के अंदर आप क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं. दैट्स हाउ यू हैव टू डू द असेसमेंट ऑफ द टॉपिक. Another yeah, we can move on to the next. Another important thing that you need to understand is your expression. So the written piece that you're writing as part of your academic writing or the writing skills piece, it needs to be, the tone would be very different from your essay, right? आप अपने essay में एक और तरह की tone के साथ एक और तरह से essay लिख रहे थे, जिस तरह last time हमने discuss किया था. It was a very personal thing. But when you talk about an academic piece or a policy paper, it needs to be very, 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 I'd say, प्रोफेशनल इन इट्स टोन. ठीक है? और उसका तरीका ये होता है दैट यू नीड टू रीड अ बिट. I'd still say कि अगर आपने you might have a great thesis on a subject, you might have identified a great problem, you might have come up with a great solution for it through your academic writing, but I'd still suggest that do some reading. And कोशिश ये करिए कि आपका जो प्रॉब्लम है वो
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस वक्त फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू हो. फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेस टू जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज नॉट फेयरिंग वेल, तो उसमें क्या करना है, बिग पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स के सॉल्यूशंस. सो इस तरह की चीज़ें जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जिसमें इंटरेस्ट भी हो यूनिवर्सिटी का. और दूसरा, आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज रीड अप ऑन इट. Things are changing very fast. There is access to information. सबको तो कोशिश कीजिए, अब your information that you're putting in should be updated, right? So you should not be doing something which has already been done. In fact, you should be doing something which has not been done, right? तो पाकिस्तान पे generally इतनी research उस तरह से नहीं होती, so we have an advantage in that sense कि maybe the perspective you as a Pakistani would be able to lend to that topic, probably somebody sitting in Oxford would not. So that is your strength, built on that. But then again, another important thing that I'd say is that कोशिश करें कि co-authored चीजें ना submit करें, right? So there might be things, for example, at times people do their thesis with 2 people or 3 people, or at times they have published something but it has like a lot of authors, maybe 2 authors, maybe 3. They like the fact that that is an original piece by you and it is solely by you, and you have come up with this critical analysis of the area that you are talking about. So even though it's I don't think that they categorically say that you cannot submit co-authored papers, but it's preferred that you write your own piece. However, I would again say that please read the guidelines on website to see exactly what sort of requirement is. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले आपसे बात की, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ फोकस ऑन इट लुकिंग वेरी प्रोफेशनल, राइट? सो यू नीड इट टू साउंड प्रोफेशनल, you need it to look professional. So apart from the tone that you have for that, it's a very academic, very I'd say policy tone that you would be adopting for this particular piece of writing. But then again, there is another important thing that you need to do. It is the formatting. So it's from the looks of it, it also needs to look professional, right? So make sure, एक तो please again I would say read कि उन्होंने क्या word limit दी हुई है. Sometimes they also mention the line spacing. Sometimes they also mention the font. Sometimes they also mention the font size, right? So ये सारी चीजें पढ़ें, and जो उन्होंने मांगा है please do that. Again, justify the text. Line spacing जरूरी है बहुत. Sometimes people try to upload Word documents. Please do not do that. Citation आपकी जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. You have access to like internet, और internet पे तो अब ये शिकागो स्टाइल और सारों की बहुत APA वगैरह के सिंपल किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं. You utilize those, right? But then I from my own example I just say that मैंने डिग्री की थी 10 साल पहले बिफोर आई अप्लाइड टू दिस स्कूल, एंड आई डिड नॉट कैटेगोरिकली क्लियरली रिमेंबर माय citations and how to do that. So what I did was, मेरी बहुत कम citations थी, 1 या 2 थी, and I used the online शिकागो का वो ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे मिल जाता है, जिधर you put in all the details and it generates the citation for you. So use that if you don't know how to do it. बिब्लियोग्राफी इफ नीडेड जरूर डालें, नहीं नीडेड नहीं डालें. लेकिन ये है कि अगर आप कोई चीज कोट कर रहे हैं, कोई स्टेटिस्टिक डाल रहे हैं, कोई फैक्ट डाल रहे हैं, so please make sure that you do referencing for it, right? So if you're saying that Pakistan is the 5th largest country in the world in terms of population, even if that's in your introduction, I would expect you to have referenced it, so that just makes it look professional, makes the person reading it know that okay, so you understand how these academic writings are supposed to be. दूसरा, again save करें उसको PDF में, वर्ड डॉक्यूमेंट मत करें, और पीडीएफ को रीनेम इट, लाइक रीनेम, ये हमने स्लाइड में भी लिखा हुआ है, अपने नाम के साथ अंडरस्कोर करके प्रॉपर इसमें जो आपकी एप्लीकेशन में आपने या कैंडिडेट नंबर डाल दें अगर लिखा हुआ है, या अपना नाम डाल दें और अपना कोर्स का नाम दे दें. सो इवन द सेविंग पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट टू लुक प्रोफेशनल. या So the writing sample can have the following things, right? It can have a title, it can have an abstract, it can have an introduction, and it can have a body, and it can have a conclusion. I'll just give you a quick overview of this. Okay, so मैं आपको अपना जो writing sample था मेरा, Sameer, I think I'll just do it till here.
and then you can go on with the next slides. Maybe I'll just give a whole overview of how I wrote my sample, right? Because it's a very daunting thing, and I think personal experiences would help them understand better how to go about it. First of all, I'll tell you कि मेरी बिल्कुल कोई एकेडमिक राइटिंग नहीं थी। मेरा ना थीसिस से मैंने अपना कंटेंट उठाया था, ना मैंने कोई पब्लिश्ड पेपर सबमिट किया था। इनफैक्ट एज आई सेड अर्लियर, आई जस्ट रोट इट एज पार्ट ऑफ माय एप्लीकेशन। दैट्स आल्सो वेरी डूएबल, राइट? मैंने ये किया था बिकॉज आई एम अ सिविल सर्वेंट। आई सॉ अ प्रॉब्लम दैट was there on ground, right? So I work in the criminal justice system back in Pakistan, so I realized that there was a gap in policy that majorly needed to be filled. And the gap was that there was no centralized database for missing children in Pakistan. And I realized because के वो centralized database नहीं है बच्चों के लिए missing children का, तो if a child goes missing from one part of the country, it's very hard for the police in another part of the country to even know that this child has gone missing somewhere. So that was a policy gap that I identified, and then I spoke about what sort of negative impact it was having on the whole of criminal justice system in ways. For example, we were finding it really hard as the police of the country to find children, even though if we had a better coordinated mechanism, अगर हमारे पास एक centralized database होता जिसकी access सारी पाकिस्तान की पुलिस को होती, तो बच्चों को ढूंढने में, बच्चों की जान बचाने में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। एंड उसके साथ ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट another thing, which was the Zainab alert bill. So if you guys remember, there was a case, a very horrific case, जिसमें एक बच्ची थी जिसके साथ ज्यादती हुई, then she was killed. So उसकी डेथ के बाद Zainab का जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल आया पाकिस्तान में, और उस बिल के एंड में लिखा था कि there'd be a national database for missing children. However, that was never implemented, right? So the law was there, but the implementation leg was missing, and that's where the policy comes in. So मैंने फिर अपने इस प्रॉब्लम को उस लॉ के साथ लिंक किया और कहा कि ये मसला है, इसकी वजह से पुलिस को बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू टाइमली रिस्पॉन्ड और हेल्प दीज पीपल, और ये ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता है, और इसका अगर इस हिस्से को हम इम्प्लीमेंट कर दें तो वी वुड बी एबल टू सॉल्व दिस इशू। और फिर मैंने उस बॉडी में, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी में फिर मैंने बताया कि किस तरह से उस लेग को हमने इम्प्लीमेंट करना है। अगेन आई वुड राइटरेट माई सेल्फ ओवर हियर एंड से दैट we are to find solutions within the resources that Pakistan has. So I could not have gone out, और मैंने अपने पेपर में ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें जो है वो $500 million चाहिए टू सेट दिस अप। इनफैक्ट मैंने यही बात की कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान ने, पुलिस ने अपने डेटा को काफ़ी हद तक डिजिटाइज किया हुआ है। उसी डिजिटाइजेशन में अगर हम एक कंपोनेंट ऐड करके उनको फेडरल लेवल पे ले जाएं और सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लें, सो वी वुड बी एबल टू एक्चुअली कम अप विद अ hotline and also a national database for missing children. So आपने उसी resources में realistic scenarios के साथ आपने जवाब देना है. You have to come up with realistic solutions to the problems that you have identified, और एक बहुत डूएबल सी चीज बतानी है. अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारा कुछ आप बॉडी में बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड देंगे, इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि प्रॉब्लम है क्या. मैंने बताया कि पाकिस्तान में इतने जो है वो लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इतने बच्चे हैं, बच्चा अकॉर्डिंग टू लॉ इज 18 years and less, एंड देन इतनी abductions होती हैं हर साल. So this is how you're setting the scenario for your paper. And then in the body I identified कि ये law है, फिर ये solution मैं समझती हूँ होना चाहिए, and then उसके बाद मैंने बताया कि इसका फायदा क्या होगा, और conclusion में आपने ये सब कुछ summarize करना है. Again, conclusion is basically introduction, but a summary of that. और introduction के end में भी कोशिश कीजिए कि जरूर लिखें that this paper or this piece is going to find us talk about the solution to the problem that has been identified in the introduction. So introduction also needs to be a very in a way it should be a summary of the things. And then again, bibliography and list of references, उसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में पहले बात कर ली है. But my only 2 cents to this whole thing would be कि first of all you do not need to panic, right? So आपने ये नहीं समझना कि जो आपका writing piece है it needs to be
something publishable. ये बिल्कुल ना समझे कि इज इट गुड इनफ, मतलब क्या इस तरह हो कि वो इतना अच्छा लिखा हो, या वो पब्लिश चीज हो, या वो इस क्वालिटी का हो कि वो पब्लिश हो जाए. दैट्स नॉट व्हाट दे आर आस्किंग. दे आर लुकिंग टू सी योर एनालिटिकल स्किल्स एंड योर राइटिंग स्टाइल, कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका एक बैलेंस्ड सोल्यूशन निकाल सकते हो, और ऑल्सो क्या एक आप प्रोफेशनल सेटिंग में लिख सकते हो अपने थॉट प्रोसेस को इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. दैट्स द ओनली गोल. सो डू नॉट फियर दिस एट ऑल. But I would again suggest that please be very, very good with your structure, right? So make sure that what I did was, when I wrote it, I made somebody who had no idea about police, somebody who had no idea about criminal justice system. I asked them to read it and tell me what I was trying to say in that paper. And they were able to do that, right? And they said, okay, yes, this makes sense. This is common sense, right? So this is the criteria that I had for myself, and it worked out. Samir, I think, do you want to take over from here? Sure, yes, thank you. Thank you so much. I know you have to be elsewhere, but thank you for coming and, covering a significant part of this. Thank you so much. Thank you. Okay. I will now take over. Okay, so Amna has, very, very helpfully, and especially using the own example, given us a good overview and some sort of structure as to how you should write your writing sample or your essay. And now these are some of the examples. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD in history, University of Cambridge requires a sample of work, and it says that applicants should provide a sample of written work in English. This should usually this is usually a thesis or 1 or 2 long essays. There's no set minimum or maximum word count for the writing samples. We recommend that students select 1 or 2 pieces of work that best represent their writing style. It is sensible but not obligatory to choose a piece of work which is at least roughly in the subject area in which you plan to do research. So here is the guidelines that, for example, if you might want to call it, the guideline for you to write a writing sample or a writing sample for PhD in history at Cambridge. And as Amna said, it varies from course to course. So you always have to keep in mind what the requirements are. This is University of Chicago, US, and Social Sciences Division, and they're given once again, proper guidance on what is, what is required. And writing sample is required for all of them. And it's not a paper written specifically for your application, but a written work that you have submitted either for a grade or for publication before. And as they also mentioned, that the preferred paper is one that is closely related to the field of study that you wish to pursue within the division. And this is admissions page for Princeton. And once again, you will be able to see what the requirements are. And anthropology has a sample of written work, 25 pages minimum, and classics, for example, has a similar thing. This is Oxford, a screenshot of the BCL, which is the LLM Masters in Law program at Oxford, and they specify what the guidelines are. Once again, they also mention what it will be assessed for. So as here you can see, this will be assessed for a comprehensive understanding of the subject area and understanding of the problems in the area and ability to construct and defend your argument and your powers of analysis and your powers of expression. As we already mentioned, as I've not covered this, you should always keep in mind what it is that the program is looking for and write and submit your written work accordingly. And finally, these were just some examples to give you an indication of how different departments set out the guidelines for writing samples and general tips, always subject to what the university requires, but generally you should run the entire paper through a spelling and grammar check multiple times before you submit. There's nothing worse than having spelling and grammar errors in a really, really strong, otherwise strong piece.
अपने दोस्तों से, अपने प्रोफेसर्स को बताएं कि वो आपके पेपर्स रिव्यू करें, get feedback on them, try and make them stronger, as strong as you can. Ensure कि कोई formatting discrepancies नहीं है, कोई typos नहीं है, comments या track changes नहीं है. Sometimes you send your essays for review to a person and they revert with comments or track changes, and कभी कभार applicants को ये भूल जाता है कि वो चीजें जो है resolve करें before they upload it, तो वो ensure करें कि वो ना हो. Coherence, flow, and legibility are the qualities one should focus on, and it's important that you demonstrate कि आप एक reason based argument बना सकते हैं. It's not enough for you to say that I believe X, I believe चीजें X तरीके में होनी चाहिए, or I believe the problem is Y. It's important for you to establish why you say that the problem is that, right? आपके बोलने से कुछ नहीं होता, you have to establish it. हमारे belief से, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा. We have to ensure that it's a reason-based argument. So consider your writing sample as a self-contained piece of writing with a clear argument or set of arguments. Often, you may prefer submitting a part of your assignment or chapter from your dissertation. In this case, you need to ensure that you still meet the criteria of coherence and legibility, and we generally suggest that you add an abstract to provide the broader context in which that excerpt is placed. क्योंकि जब आप एक बड़े से piece में से छोटा सा piece निकालेंगे, उसका stand alone जो उसका value है, वो आपको दिखाना पड़ेगा by setting it in the broader context. And finally, बहुत ज़्यादा important है ये कि you submit the work that is yours and yours alone, and you use the proper mode of citation. If they have mentioned that you should cite in a particular style, then you should do that. And remember to stick to the disciplinary method in writing of the course for which you are submitting the paper. जैसे कि अगर आप masters in law के लिए writing sample upload कर रहे हैं, तो you should ensure that the writing is strongly doctrinal in nature. जिस तरह से एक legal या law paper लिखा जाता है, उस तरह से हो. और similarly, अगर आप history program के लिए apply कर रहे हैं, तो you should ensure कि आप वो methodological concepts में engage करें. So basically, just be discipline का वो paper है, चाहे वो econ का है, law का है, history का है, anthropology का है. You have to ensure कि उस discipline के methods या उस discipline का writing style जो होता है, उसको आप match करें. Or finally, ensure that you don't exceed the word limit. With that, that is the presentation part of it. If you have any questions, I am very happy to answer those now. As usual, please raise your hand and unmute yourselves or put them in chat, or we'll cover it. Are there any questions? Yes, Qasim. Hello everyone, good evening. Thank you for taking my question. मेरा क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई. आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप. I have already applied for my previous application to University of Cambridge, and I have submitted my writing sample. लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे सुना और मैंने जो पेपर वहाँ पे सबमिट किया है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट. मेरा क्वेश्चन तो मतलब ये उस हवाले से था जो जिस तरह फॉर एग्जांपल टाइटल हो गया, मतलब ये है कि ये बिल्कुल जिस तरह हम रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन एक ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह का एकेडमिक राइटिंग ये सैंपल मांगते हैं, या मतलब
अगर इसमें जिस तरह टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन, ये जो एलिमेंट्स है पेपर के, इसके बगैर भी मतलब हमारा कोई राइटिंग ऐसे हो सकता है। आई वांट टू ऐड समथिंग दिस, क्योंकि मैं जब अप्लाई कर रहा था, व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर माय प्रीवियस एकेडमिक ईयर, so I have asked some question about from my supervisor at Cambridge University. तो उसने मुझे ईमेल पे ये सजेशन दी थी कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री में जो बैकग्राउंड है, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मतलब आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है विद डिफरेंट रिसर्चर्स और स्कॉलर्स, मतलब आपकी जो ये है कि वर्क विद इंटर डिसिप्लिनरी साइनर्जी, तो आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। तो मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पेपर लिखा था। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि विदाउट एलिमेंट्स जिस तरह इंट्रोडक्शन टॉपिक, इसके अलावा भी हमारी वैसे पैराग्राफ वाइज, जिस तरह हम पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इस तरह हमारा एकेडमिक राइटिंग सैंपल हो सकता है, या ये जो जिस तरह हमारे जो आप दूसरे जो होस्ट हैं उसने जिस तरह प्रेजेंटेशन के अंदर बताया कि you have to write your topic, your abstract, and then your introduction, your body, and conclusion and references. जी, बहुत शुक्रिया कसम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है। हम वी सजेस्ट कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिखें, स्पेशली अगर आप, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि जिस तरह एक राइटिंग, जिस तरह एक रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन करें कि आगे आप क्या लिखने वाले हैं और ये राइटिंग सैंपल क्या है। स्पेशली अगर आप एक बड़े से पीस में से, मान लीजिए अगर आपने डिसर्टेशन लिखा है और उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल रहे हैं, सो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एब्स्ट्रैक्ट में या वो एक्सर्प में या नोट में, जो भी आप उसको कहें, आप वहां पे लिखें कि ये जो है, ये एक्सर्प या ये जो राइटिंग सैंपल है, it is part of a broader project, or it's part of a broader paper in which you have argued a number of things, but in this excerpt, in this writing sample, you are putting forth the following argument. So वो context देना बहुत जरूरी होता है। especially मैं बार बार ये कहूँगा, अगर आप stand alone essay लिख रहे हैं तो शायद जरूरी नहीं है, but अगर आप किसी एक पुराने पीस में से एक बड़े पीस में से छोटा पीस निकाल रहे हैं, तब उसको वो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट की बात। और एंड देन फॉर अदर थिंग्स, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डायरेक्टली लिखें कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वो हेडिंग दे दें, बट दैट्स द स्ट्रक्चर दैट यू शुड फॉलो। कि इंट्रोडक्शन में जैसे हमने बताया कि आप प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करें, आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, उस बेसिकली के पहले पैराग्राफ या पहले 2 पैराग्राफ में आप वो करें, फिर सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में आप वो एस्टैब्लिश करें बॉडी में कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह प्रॉब्लम है, किस तरह उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या आपका आर्ग्यूमेंट है, और फाइनली कंक्लूजन में आप उसको समराइज करें कि मैंने अभी ये बताया कि ये प्रॉब्लम है और मैंने बताया कि इस मेथड से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप वो डायरेक्टली वो हेडिंग्स लिखें, बट हेडिंग्स से जो क्या होता है, हेडिंग से आपकी राइटिंग क्लियर हो जाती है। स्टेप वाइज इंसान को समझ आता है, जब आपका कोई पेपर पढ़े तो उनको स्टेप वाइज समझ आ जाएगा, चलिए इस बंदे ने फिलहाल बताया कि ये इस बात की को प्रॉब्लम मानते हैं, अब ये बताएंगे ये प्रॉब्लम क्यों है, उसके बाद ये बताएंगे इस प्रॉब्लम के डिफरेंट वजूहात क्या है, उसके बाद ये बताएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है और आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है लिखने का, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। नहीं तो अगर 2000 वर्ड इंसान बस पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ लिखे, तो पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो सकता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि बार बार वन आफ्टर द अदर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं विदाउट एनी sort of structure। तो उस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखे अगर आप वो हेडिंग्स दे दें, देयर कैन आल्सो बी सब हेडिंग्स। जैसे हम ना ये जो एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज का एजुकेशन पे क्या असर है पाकिस्तान में, तो आप पहले लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा किस तरह डिफाइन करते हैं, एजुकेशन का उसके साथ क्या वास्ता है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट,
और इन हर एक चीज को आप हेडिंग्स बना सकते हैं। हर एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स के ऊपर एक छोटी सी हेडिंग आप दे सकते हैं ताकि आपके पेपर में एक स्ट्रक्चर नजर आए। सो जो आप इंसान जो आपके सिर्फ हेडिंग्स देखेगा उसको समझ आ जाएगा कि ये आप चीजें बोलने वाले हो इस ऐसे में विदाउट इवन रीडिंग इट। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। जब भी आप देखोगे जो जो अच्छे अच्छे पेपर्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे एसेज होते हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर होता है। उनमें आपको पहले ही पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि इंसान क्या बोलने वाला है इस ऐसे में। और अगर आप उनका कंक्लूजन पढ़ेंगे, उस कंक्लूजन में आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान ने क्या बोला है इस ऐसे में। सो दैट्स द हॉलमार्क, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ गुड ऐसे। कभी कभार क्या होता है कि हम इंट्रोडक्शन में एक कहानी लिख लेते हैं और फिर कहानी के बिल्कुल एंड पे बोलते हैं कि अब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, जिसका कि कोई उतना ज्यादा मतलब इट्स नॉट, आई वुडंट रिगार्ड दैट एज अ स्ट्रॉन्ग ऐसे अनलेस आप एक एंथोलॉजी लिख रहे हैं, अनलेस आप एक स्टोरी लिख रहे हैं, तो फिर एक दूसरी बात है। बट जब भी आप एकेडमिक राइटिंग में एकेडमिक राइटिंग करते हैं उस टाइम पे आई थिंक ये ख्याल रखना चाहिए कि उसमें एक स्ट्रक्चर हो एंड द आर्ग्यूमेंट शुड फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। अच्छा, दूसरा जो माय सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसी एकेडमिक राइटिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल I am working on archaeological sciences or archaeological material sciences. So in Pakistan we don't have any course of archaeological sciences. So I think it's a problem in Pakistan. So should I highlight should I write the academic paper in this context, like archaeological sciences in Pakistani context, or मतलब इसी हवाले से मैं इस पेपर को, इस एकेडमिक राइटिंग जो सैम्पल है इसको लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल साइंसेस जो है ये प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान में ये फील्ड नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट में। बाकी जो आपने ऐसे का जो स्ट्रक्चर बताया उसकी मुझे समझ आ गई। जिस तरह मेन बॉडी हमारी हेडिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट्स को बिल्ड करना है। तो मतलब मेरा ये होना चाहिए, हो सकता है ये पेपर, क्योंकि आई वांट टू स्टडी आर्कियोलॉजिकल साइंसेस मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। ये टॉपिक, ये बेसिकली जो सवाल है ये है टॉपिक सिलेक्शन पे। तो टॉपिक आपको किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए और कौन से सेलेक्ट करना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर आप मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल साइंसेस पे डिग्री करना चाहते हैं तो आपका टॉपिक जितना क्लोजली रिलेटेड होगा आर्कियोलॉजिकल साइंसेस के उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इन एडिशन टू शोइंग कि आप इंग्लिश में एक आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, इससे आपकी इंटरेस्ट भी पता चलती है आपको उस सब्जेक्ट में। अब आर्कियोलॉजिकल साइंसेस का डिग्री पाकिस्तान में न होना इज अ प्रॉब्लम, बट वो एक एजुकेशन का प्रॉब्लम है, राइट? वो एक करिकुलम का प्रॉब्लम है। क्या वो आर्कियोलॉजिकल साइंसेस का इशू है? शायद नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइंसेस के प्रोग्राम्स हों, बट आर्कियोलॉजिकल साइंसेस की परेशानियां जो अपने इश्यूज हैं वो फिर भी वैसे ही रहेंगे या रह सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको खुद में सोचना है कि मैं ये जो ऐसे लिख रहा हूँ, क्या ये ऐसे उस टॉपिक पे लिख रहा हूँ जिस पे मैं अपनी डिग्री करना चाहता हूँ या जिसके रिलेटेड मैं अपनी डिग्री करना चाहता हूँ। मैं मान लीजिए कोई इंसान है जो कहे कि मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, राइट, और बोले कि हमारे सूबे में या हमारे मतलब कंट्री में हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है। वो जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा आ जाएगा आपके पर्सनल स्टेटमेंट में कि क्यों आप यहाँ से निकल के, पाकिस्तान से निकल के या अपने रीजन से निकल के आप दूसरी जगह कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने जितना आपको पढ़ना था पाकिस्तान में, जितना आप कर सकते थे आपने वो कर लिया, बट आपके पास अब आगे के कोई भी मतलब मौके नहीं है उस चीज पे काम करने के लिए। वो एक पर्सनल रीजन है, वो एक इंस्टीट्यूशनल रीजन है, बट वो नेसेसरली मेरे हिसाब से वो इट्स नॉट एन इशू ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंसेस, इट इज एन इशू ऑफ करिकुलम, इट्स एन इशू ऑफ पॉलिसी, इट्स एन इशू ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, बट नॉट रियली दैट।
जबकि आर्कियोलॉजिकल साइंसेस का एक स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है जिसमें आप लिखें, और मे बी ऐसा एक हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल साइंसेस को किस तरह पढ़ाया जाता है, दैट कुड बी अ सेपरेट टॉपिक इन इटसेल्फ, राइट। बट इन सिर्फ अगर आप एक आर्कियोलॉजिकल साइंस के बारे में लिख रहे हैं और बाद में आप बोलें कि पाकिस्तान में ये है नहीं, दैट आई डोंट थिंक वुड बी एन द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू डू इन अ राइटिंग सैंपल, अनलेस वही टॉपिक है कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिकल साइंसेस का हाल क्या है, तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती है। और एक लास्ट चीज में आई वांट टू ऐड समथिंग। मैंने टाइम ज्यादा लिया और भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे। ये तो मतलब प्रॉब्लम मतलब ये है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल साइंसेस की जो रिसर्च है पाकिस्तान के अंदर, जो साइंटिफिक तरीके से हम रिसर्च करते हैं, जिस तरह वी डोंट हैव आर्कियोलॉजिकल साइंस लेबॉर्टरीज जिसमें हम मटेरियल साइंसेस एनालिसिस, ये तो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर के जो हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि ये जो रिसर्च जो हमारी हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो साइंटिफिक तरीके से नहीं है, या आई वुड से कि ये मतलब आउटडेटेड मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की वजह से है। तो मेरे ख्याल में आपके जहन में ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, खास तौर पे क्योंकि आप जो है उसकी मेथोडोलॉजी पे काम अब बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल साइंसेस की मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे अडॉप्ट नहीं की जाती है, या आउटडेटेड है, या उनको ठीक से नहीं किया जाता है। नाउ इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंसेस, राइट, एज अपोज टू कि हमारे यहाँ डिग्री है, हमारे यहाँ इस पे कोई प्रोग्राम नहीं है, दैट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। बट जब आप बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल साइंसेस की कुछ मेथोडोलॉजीज हैं, कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, और देखिए वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं यहाँ फिट नहीं हो पाते हैं, यहाँ के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो इम्प्रॉपर है, इनअप्रोप्रिएट है, इनएडिक्वेट हैं, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं उनको अपने फील्ड के मेथोडोलॉजीज के साथ, तो आई थिंक दैट शुड बी a good writing sample. Thank you so much for your time and taking my question. No problem. Thank you, Faisal. Does anyone else have any questions? Yes, Noorland. Hello, I'm Noorland from Islamabad, and I'm aiming for a PhD in migration studies या public policy. काफी सारे जवाबात तो ये जो साहब हैं इनके सवाल में आपने दे दिए हैं, लेकिन आई वांट टू आस्क स्पेसिफिक वन कि अभी मैंने रिसेंटली एक पॉलिसी मेमो ड्राफ्ट किया था एक फेलोशिप के अंडर, जो बहुत डिटेल था। उसमें अंदर मेरे पास रिसर्च रिसोर्सेज भी थे, सब कुछ था, डेटा कलेक्शन थी, फिर उसको बहुत से लोगों ने रिव्यू किया, मतलब उसका एक मतलब अच्छी चीज बनी, वो पब्लिशेबल, उसकी रीडिंग वगैरह भी हुई। तो अभी पाकिस्तान में रेफ्यूजी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या वो, और वो बहुत पुराना नहीं है, अगस्त में वो पब्लिश हुआ है, मतलब इस साल के अगस्त में वो पब्लिश हुआ है, तो एक तो लेटेस्ट है। और अभी जो मैं रिसर्च करना चाहूंगी फ्यूचर में वो यही होगी कि जब एक जगह पे लॉ नहीं होते जैसे पाकिस्तान में, तो वहां पे रेफ्यूजीज कितने वल्नरेबल होते हैं कि किसी टाइम भी कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाएगा और उनको जो है वहां से धकेल दिया जाएगा। तो अब मैं इसके रिपरकशन से बात करूंगी। पहले मैंने सिर्फ ये हाईलाइट किया था कि लॉ के कौन कौन से इदारे पास कर सकते हैं या कौन कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। तो वो एक बहुत वेल रिसर्च अच्छा किस्म का, उसके पीछे मेरी 3 साल की रिसर्च थी, वो एक सैंपल है। क्या आपके ख्याल में मुझको इसको राइटिंग सैंपल के तौर पे भेजना चाहिए किसी जगह पे, या मुझे जैसे वो खातून जो पहले फरमा रही थी कि आप अगर स्क्रैच से भी करना चाहते हैं और आपको समझ आया कि आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं टू अ सर्टेन डिग्री और आप एक अच्छा मतलब एनालिटिकल लिख सकते हैं 1-2 सफ़ों का, तो आप बेशक स्क्रैच से लिखते हैं। तो अभी इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि आई होप आई वाज एबल टू लाइक Yes, मेक द no, क्वेश्चन क्लियर। या बिल्कुल, थैंक यू। no problem. Thank you. पहले तो मतलब ऑफ कोर्स जो रेफ्यूजी की हालात है अभी खासतौर पे पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हम सब से जितना हो सके हमें हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम कुछ आवाज उठाएं। बट बिसाइड्स द पॉइंट, अभी आपने ये जो आप या तो पॉलिसी में या माइग्रेशन स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं। पॉलिसी में जनरली जो रिक्वायरमेंट होती है
वो एक पॉलिसी मेमो या पॉलिसी पेपर या पॉलिसी ब्रीफ की होती है। और आपका जो ये राइटिंग सैंपल है, आपका जो ये रिपोर्ट है जो आपने लिखा है, इट सीम्स मोर लाइक अ पॉलिसी मेमो और अ रिपोर्ट, पॉलिसी रिपोर्ट। तो उस चीज के लिए ये मुझे लगता है ज्यादा सूटेबल हो सकता है। बट आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि क्या आप उसमें कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से कहाँ से लॉज आ सकते हैं, what are the authorities that are capable of or that are empowered to pass laws, orders, notifications, etc. on these things. अगर आप सिर्फ वो कर रही हैं, then it is a really helpful exercise, बहुत अच्छी बात है, बट वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, उस पर आपका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप सिर्फ उसमें बता रही है कि यहाँ से लॉ आ सकता है, यहाँ से लॉ आ सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। तो डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट्स जनरली एडवाइजेबल नहीं होते हैं बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट। अगर आप अब उस पेपर में डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है कि यहाँ से लॉज आ सकते हैं, एंड देन यू क्रिटिक, देन यू टॉक अबाउट क्यों ये परेशानी है कि सिर्फ इन चीजों से लॉज आ सकते हैं, या क्यों परेशानी है कि इन सब चीजों से लॉज आ सकते हैं, या जो भी परेशानियां उस सिस्टम की है। इफ यू देन मेक दैट analysis in the paper, then it becomes a descriptive and an analytical paper, which will become more relevant, more important as a writing sample. But अगर वो सिर्फ एक descriptive है, तो then I would say कि आप उसको एक थोड़ा avoid करें, because descriptive papers are not generally well regarded. ये है पॉलिसी की। दूसरी बात है अब माइग्रेशन स्टडीज में। माइग्रेशन स्टडीज में जनरली आपको एक एकेडमिक पेपर लिखना पड़ेगा। आप इसको बेस बना के लिख सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव टू, जो आप माइग्रेशन स्टडीज में लिखेंगे, इट हैज टू एंगेज विथ माइग्रेशन स्टडीज का रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, उसके डॉक्ट्रिनल, उसके सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिनरी मेथड जो हैं, उनके साथ एंगेज करना चाहिए कि क्या उस टॉपिक पे और स्कॉलर्स ने क्या लिखा है, आप उसके साथ एंगेज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, उस तरह से। सो पॉलिसी जो है जनरली होता है कि ये एक परेशानी है, इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या इसको इस तरह ब्रेक डाउन किया जा सकता है और इसके बाद इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। एकेडमिक चीज होती है जनरली टू फंडामेंटली अंडरस्टैंड समथिंग more than prescribing something as a solution. तो एकेडमिक चीजों में आप देखते हैं कि इसको किस नजरिए से, किस मेथोडोलॉजी से, किस फ्रेमवर्क से आप इसको समझने की कोशिश कर रही हैं। सो आई थिंक मतलब जितना आपने बताया उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक पॉलिसी के लिए ये एक अच्छा पेपर हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप उसमें आर्ग्यूमेंट भी दे दें। दूसरा, माइग्रेशन स्टडीज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप इसको अपना एक बेस बना सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक काम है विच इज अ ग्रेट थिंग। आप इस पे को बेस बना के यू कैन कम अप विद अ टॉपिक दैट रिलेट्स टू द डिसिप्लिनरी मेथड्स, डिसिप्लिनरी ट्रेडिशंस या बाकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स ऑफ माइग्रेशन स्टडीज। क्योंकि एज इज आप इसको एक लॉ पेपर भी लिख सकते हैं कि लॉ मेकिंग पावर्स किस किस के पास है। रेफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको पॉलिसी इशू भी बना सकते हैं कि रेफ्यूजीज को किस तरह, रेफ्यूजी क्राइसिस या रेफ्यूजी इशू को किस तरह रेगुलेट किया जाए। आप उसको माइग्रेशन वाला टॉपिक भी बना सकते हैं, इन विच केस ये दो एलिमेंट्स जो मैंने बताया लॉ और पॉलिसी के, वो थोड़े उसमें कम रहेंगे। दे कैन फॉर्म द बेस फॉर यू टू टॉक अबाउट देम, बट वो मेन नहीं रहेंगे। आई होप that answers the question. Yes, you did. Thank you so much for your time. Thank you. No problem. Then there's a question in chat. If we haven't published an article, but we have published a research project or worked on a research project, how can we shape our writing sample? एक published piece की जरूरत नहीं होती है. You are not expected to submit a paper or an essay that is published somewhere. अगर आप research project, let's say, I will once again take example of Noorlan. उन्होंने एक research project पे काम किया है, and then she has come up with a report or a document. आप उसको जो भी कहें, आप उसको रिपोर्ट कहें, पेपर कहें, वर्किंग पेपर कहें,
जो भी है व्हाइट पेपर कहें, पॉलिसी पेपर कहें, शी हैज कम अप विद दैट। अब उसमें से किस तरह से आप राइटिंग सैंपल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उसके बेसिस पे कैसे बना सकते हैं, इट विल डिपेंड एज आई सेड once again on the program that you are applying to, और उसी तरह से फिर आपको शेप करना पड़ेगा। You can form इसमें once again इस एग्जांपल में आप एक लॉ पेपर भी बना सकते हैं, पॉलिसी मेमो, पॉलिसी ब्रीफ, पॉलिसी पेपर भी बना सकते हैं, माइग्रेशन स्टडीज, रेफ्यूजी स्टडीज उसका भी बना सकते हैं। You can look at particular aspects, अगर आप मान लीजिए women's studies पे काम कर रहे हैं तो refugee and women would be a topic that you can pick from that, क्योंकि I'm sure जब आप refugees के context में देख रहे हैं कि law कैसे बन रहा है, उनको किस तरह से डील किया जा सकता है उनके साथ, then you will specifically also be talking about women, क्योंकि वो एक vulnerable group है। वैसे अगर आप child rights पे या children's चाइल्ड स्टडीज पे आप करना चाहते हैं तो वो भी एक वल्नरेबल ग्रुप है, वो भी कर सकते हैं, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम स्टडी दैट हैज बीन कंडक्टेड, तो उस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। I hope that answers the question. MS, PhD development studies or international development के बारे में कुछ बताएं। It's the same as migration studies, to be honest. International development में भी आपको एक राइटिंग सैंपल इस तरह का होना चाहिए जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में फिट हो, एज इन कि उसका टॉपिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, और उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्योंकि एक बहुत ही वसी जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, आपको उसमें एक स्पेसिफिक सवाल उठाना है और उस स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना है। ये जो राइटिंग सैंपल होता है, राइटिंग सैंपल को दिस इज आई एम नॉट नाउ आंसरिंग स्पेसिफिकली टू डेवलपमेंट स्टडीज बट मोर जनरली, जो राइटिंग सैंपल होता है आप उसको ऐसे समझिए कि आप एक एसे लिख रही हैं। जब आप एक एसे लिख रहे हैं, उस एसे में या तो आपको एक सवाल होगा, आप उस सवाल का जवाब देंगे और आप बताएंगे कि क्यों आपका जवाब सही है, राइट? या तो आपके पास एक प्रॉम्प्ट होगा, आप उसको डिस्कस करेंगे, right? Without answering, you don't have to answer a question. Sometimes, for example, the question can be, is democracy or elections necessary for a democracy? राइट, ये एक आपका पेपर हो सकता है, उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस आर नॉट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी, और व्हाटएवर इट इज दैट यू चूज टू, बट आप जवाब दें, एंड देन यू हैव टू एस्टैब्लिश व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी और नॉट नेसेसरी, जो भी आप एक पेपर लिखते हैं। अब मान लीजिए ये जो टॉपिक है ये फिलोसफी में आ सकता है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी आ सकता है, ये पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी में भी आ सकता है, तो बहुत सारे चीजों में आ सकता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड, उसके बेसिस पे आप बताएंगे क्या आंसर क्या है, एंड देन इट कुड बी हियर, मान लीजिए elections are necessary for democracy, discuss, right? Now you are not answering, you are just discussing whether elections form a necessary criteria for democracy. आपको फिर democracy मान लीजिए उसमें establish करना पड़ेगा, what do you mean by democracy? Democracy के ingredients क्या है, and therefore does election process form one of the ingredients of democracy, right? अगर वो बनता है, आपको वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ किस तरह बनता है, and then you will have established it. So basically, I know I gave an example that's not necessarily related to development studies, but आपको एक सवाल उठाना पड़ेगा या आपको एक टॉपिक उठाना पड़ेगा, आपको उस सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा, आप उस जवाब को लिखते लिखते आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप एग्जिस्टिंग मटेरियल जो है, एग्जिस्टिंग स्कॉलरली लिटरेचर जो है, बाकी जो इस चीज पे उस इशू पे लोग काम करते हैं, प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स काम करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, उस बात के साथ एंगेज करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि आई आर्ग्यू डेमोक्रेसी, इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। Then you will have to establish कि कौन कहता है, let's say some famous authors or professors or academics who work on democracy, उन्होंने बोला होगा, किसी ने बोला होगा ये कि इलेक्शन जो है नेसेसरी है डेमोक्रेसी के लिए, आप उनको यूज करेंगे, दैट यू विल रिलाई ऑन देयर आर्ग्यूमेंट्स। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ नया आप रेवोल्यूशनरी आइडिया ले आए अपने ऐसे में, बट आप उनके आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे अपना
सवाल अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। बट यू विल देन ऑल्सो सी के नहीं किसी कोई एक ऑथर है जिन्होंने बताया है कि नहीं इलेक्शंस आर नॉट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, देन यू विल हैव टू काउंटर है कि क्यों उनका आर्गुमेंट सही नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय एंगेजिंग विथ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज an academic writing piece that you are submitting. तो academic writing piece में आपको existing literature के साथ engage करना बहुत जरूरी होता है। And then there's a question about sharing the writing sample. We will try and share one via email. Are there any more questions? Okay, looks like we have come to the end of the session. Thank you so very much. You will, sure, yes, sorry, I spoke too soon. Amna, you can go ahead. Amna, we can't hear you. I don't know if you're trying to ask. Hear me, please? Hello? Can you hear me, please? Yes, yes, we can. Okay. So as far as I was in the meeting, there was lots of discussion about law and all these things. As I'm not from this background, basically I belong from the natural sciences and I did my bachelor's in chemistry. So I know the things that are more relevant to the chemistry and research like this. So I have done my bachelor's. 2 of my publications are in writing process, but up till now I have not written any research paper. So considering my background, can you please elaborate how can I deal with my writing sample? How can I craft my writing sample? Because it's not clear to me. Thank you. आपने बताया कि you know there are 2 publications that are already in process. उन्हीं में से आप लिख सकते हैं. So you can use those. और generally STEM में life sciences या natural sciences में writing samples का requirement थोड़ा different होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहाँ writing ज़्यादा हो. So sciences में ज़्यादा writing नहीं होती है, उसमें applied research या lab work या ये सारी चीजें होती है. In which case the requirements are different. So you should first check कि आपके कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है. और हमने इसलिए पहले ही बताया कि ये जो हम बता रहे हैं आज का सेशन, इट इज मोस्टली रेलेवेंट फॉर सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, क्योंकि सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग सबसे मेन कंपोनेंट होता है स्टडीज का. चाहे वो अंडरग्रेड में हो, मास्टर्स हो या कहीं भी, राइटिंग इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. और इसीलिए राइटिंग सैंपल्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्टेम में उसी तरह नहीं होती है. देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स, बट आपको यू शुड फर्स्ट चेक कि आपके कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ अ राइटिंग सैंपल एंड देन सबमिट. एंड देन टू यू नो वेरी डायरेक्टली आंसर योर क्वेश्चन कि आपने बताया कि आपकी जो पब्लिकेशंस है प्रोग्रेस में, आप उन्हीं में से किसी एक को डेवलप कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स, एंड फिर आप उसी को सबमिट कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड टू हैव अ रिसर्च पेपर यू नो इन पब्लिकेशन ऑलरेडी, या ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो. जो भी आपको देखना है कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल ऑलरेडी है, क्या आपके पास ऐसा कोई ऐसे, कोई रिसर्च पेपर, कुछ भी ऐसे जो भी है that would meet the requirements. If it does, great. If it does not, then you adapt it, you modify it and make sure कि जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करे. और अगर नहीं है तो फिर आप नए से एक स्क्रैच से एक नया टॉपिक चूज करके उस पे आप राइटिंग सैंपल लिख सकते हैं. Okay, thank you so much. It's clear now. Wonderful. Great. Thank you so very much, everybody. I just think this was our 8th workshop. हमने अभी तक 10 में से 8 workshops किए हैं. The next 2 workshops are not related to
written applications, but about interviews and other things. So we might not organize those workshops next weekend, but we will do them sometime soon. Regardless, जो भी होगा हम आपको email पे बताएंगे कि कब वो workshops होंगे. But I hope you are receiving the support that you're receiving the support for your university applications. There's just one question that has come to me through direct messages. And there's someone who has asked, I have 2 international paper publications in management sciences. Can these papers be effective? I can't say क्या वो effective हो सकते हैं या नहीं हो सकते. It will depend on कि वो topic क्या है, किस तरह लिखे गए हैं, how what is their what is the style and all of those things. You will always need to ensure कि जिस कोर्स में आप अप्लाई करें उस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है. इफ यू थिंक कि आपके वो पेपर जो है उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, देन दे विल बी इफेक्टिव. ऐसे जनरली कोई भी आपको नहीं बता सकता कि क्या ये राइटिंग सैंपल या क्या ये पेपर जो है इफेक्टिव है या सफिशिएंट है. यू विल नीड टू चेक कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. Great. And the recordings, you will have already received a link. हमने email से आपको एक link भेजा to the playlist. उस playlist में last 6 recordings already है. 7वीं कल थी और 8वीं आज है और वो भी 1-2 दिन में upload हो जाएंगी. So you don't need to get a new link from us. जो हमने आपको playlist की link भेजी है उसमें ऑलरेडी आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे. पिछले 6 सेशन जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं, और नए 2 जो हैं वो भी जल्दी से आ जाएंगे उसमें. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीबॉडी एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग, डे, नाइट, wherever you are, and we will see you sometime soon at the next workshop. Bye.